तो बच्चे आ जाएं। कितनी तादाद है आपकी? अभी तो बच्चे कम आए हैं। आई थिंक जस्ट 5 or 6। तो लास्ट टाइम क्या पढ़ा है ये बताएं। करंट अफेयर, रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स, टूल्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आज हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं। तो डिटर्मिनेंट को आप दो हिस्से में तकसीम करेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स। internal and external determinants, right? इंटरनल की लिस्ट आप लिखें बेटा। नंबर 1 हिस्ट्री, नंबर 2 ज्योग्राफी, साइज एंड लोकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइज एंड लोकेशन, मिलिट्री पावर, पॉपुलेशन, economic growth and development, quality of diplomacy,
leadership and ideology, natural resources, think tanks and media, and science and technology, and good governance. जी बेटा, हो गया? कितने हो गए हैं? काउंट किए आपने? जी, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि which determinants, सबसे पहले which determinants matter in foreign policy of Pakistan? So important determinants for the foreign policy of Pakistan. ठीक है? Number one, economy. I think your NS is circulating around your economy. So your priority is your economy. The priority is the economy. And according to the history of the state, imperialism, you will see that economic remain ultimate goal for the states. You know, as colonial period started, economic was the goal for colonial period. That's why European countries started making colonies. They wanted to exploit the resources of other and to make their economies stronger. Because there was a concept in Europe, they will be stronger politically if they are stronger economically. So economic strength will give political strength. And to maximization their power, they actually collect the economic resources. They plunder the resources, money, material from the colonies, and they went into the race of mercantilism, race of maximization of power. जी, आंसर समझ आई है? So if you want to make yourself stronger, powerful, you can do it by economic power. That is the real power.
So foreign policy is dependent on the economy. Nowadays the countries who are emerging their economies are getting their power and politics. For example, BRICS are the countries who are fast growing economies and mostly industrial economies, right? So अगर इकोनॉमी अच्छी हो रही है, ब्रिक्स में अच्छी इकोनॉमी वाले कंट्रीज हैं, अगर इकोनॉमी अच्छी हो रही है, सो पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंट ऑन योर इकोनॉमी. We shifted to IMF nowadays. We shifted to American bloc nowadays because of taking loans. It was our need. So economy become our dependency. We need political stability just to increase the economic measures, economic standards, just to get economic stability. And your relation with China connected with the economy. China has invested CPEC here, and that will grow to your economy. That will give growth to your economy, right? So your relation and your foreign policy is working to secure your economy further, better. हमारे जो कॉमन डिस्कशंस क्या चल रही हैं? beggars are not chooser, हम गुलाम हैं क्या? Like these two narratives are bothly are dependent on the economic narrative. According to हम गुलाम हैं क्या mean, we will not prefer the instructions and directions of other countries. We will go to our economic interest. हम गुलाम हैं क्या का मतलब यही था ना कि हम किसी की बात क्यों सुने, हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखेंगे. हमें कहाँ से फायदा है, किस मुल्क से फायदे से मुराद इकोनॉमिक बेनिफिट है. और वो जो कहते हैं beggars are not chooser, so again they are talking about economic dependency. So you cannot be free until you are dependent, until you are taking loan. So you have to follow the principles and rules and regulations of those countries who are the donor. So donor countries की बात को आपको मानना पड़ता है so that आप अगला लोन ले सके, आप उस economic benefit ले सके. So both narratives were connected with the economy, and still they are connected with the economy. So your foreign policy is totally dependent on economic measures, economic policies, economic strengthens, economic stability. And historically भी यही है कि हर स्टेट का जो अल्टीमेट गोल है वो सिक्योरिंग इकोनॉमिक टू इकोनॉमिक प्रॉमिसेस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट. सो हमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें इम्पैक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है? हमारी इकोनॉमी कमजोर है जिससे हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस इम्पैक्ट हो रहे हैं. फॉरेन पॉलिसी टू लार्जर स्केल इम्पैक्ट हो रही है. समझ आई है भाई? कहानी समझ आई है? अच्छा, पाकिस्तान को कौन कौन से इम्पैक्ट करते हैं आपने हेडिंग लिखी है? पहले मुझे ये बताया, पहली क्लास में टाइप कौन कर रहा था? was typing these things? पहली क्लास में ये टाइप किया था किसी बच्चे ने, या स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? कोई कर की थी किसी ने? आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आपको?
मैंने पूछा कौन था जकरिया नैयर नैयर आपने लिखी थी वर्ल्ड फाइल? किसने लिखा था? उसको अपॉइंट करा ना दोबारा। तो फिर दोबारा लिखो ना। ठीक है, तुम्हें वो दे देते हैं, और एक्सेस दे देना, स्क्रीन शेयर के एक्सेस दे दें। जाकिर, नैयर जाकिर। तो चैट में लिखो फिर, ठीक है। तुम्हें अलाउ कर दिया उसने? बिलाल कह रहे अलाउ कर दिया आपको कोऑर्डिनेटर ने, राइट? तो आप सब शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। ठीक है, चैट में लिख लें, कोई इशू नहीं, चैट में लिखे और बाद में फाइल में दे दें। साथ साथ पेस्ट करती जाइएगा ना। सो तो मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कौन से फैक्टर ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। एक तो इकोनॉमी है, दूसरा क्या है आप बताएं? आई थिंक लोकेशन है जी। दूसरा क्या है? लोकेशन, साइज एंड लोकेशन, मोस्टली लोकेशन मैटर करती है। अब लोकेशन पे हम बात कर लेते हैं जी। As we studied from the beginning in early classes, I mean, in your background and basic classes, that Pakistan is located on very important location. My question is whether you are having good location, are you, or this location developed later on? For example, in 1947, you were having a location of East Pakistan and West Pakistan. The country was divided into two parts, and in between we were having 7 times greater enemy, India, and we were having no way, no route to reach our East Pakistan until we crossed more than 1,000 nautical mile water territory to reach our East Pakistan. From and the West Pakistan was covered with the longest border of India. From the east side, and from the west side, Afghanistan was not recognizing Pakistani border during line as international border. So we were sandwiched between Pakistan, between India and Afghanistan. Both rivals do not want the existence of Pakistan. So can we say ourselves that we were having good location that time?
can we propose that we were having good location that time? It's my question. कोई जवाब दे दो मट्टी की दीवारों. But nowadays, no, the situation is changed now. Your location is important because situation is changed. So your location become important after change of situation. Number one, China evolved very fast and become now the leading country of the world, leading economy of the world. Number two, India itself is the fourth biggest economy of the world after the China, right? Number three, Iran is a very important country historically and geographically. That is connecting South Asia with Central Asia and Middle East same time. And you are having Arabian Sea in the south that has become the support for great power competition. Great spot for the great power competitions between China, USA, right? And China and India. So it is called Indo-Pacific 0.2. A conflict of Indo-Pacific 0.2. And through this Arabian Sea, you are connected with Arabian Peninsula. And Persian Gulf, that is the energy cell of the world. So, if you talk about the region, South Asia, you're very, very important country because the majority population living in this region, and there are 4 to 5 countries who are the nuclear power and they are sharing their border consecutively. For example, Pakistan has nuclear, India has nuclear, China has nuclear, North Korea has nuclear, and Russia has nuclear. And Iran is very close to get nuclear. So there are 5 to 6 countries who are nuclear power living in the same region. And these countries are having the biggest population of the world. So center of power is shifting to this area where you are located. You are in between 2 economic power, India and China. So clear, my dear, that's why now your location has become very important. Now you are sitting, you are located in downtown of the world. Downtown of the world. क्या मैंने बोला है? Downtown of the world. दुनिया का डाउनटाउन क्या होना है? डाउनटाउन कौन सी जगह है? ये साउथ एशिया. आपकी जो लोकेशन है साउथ एशिया और आप सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करते हैं. योर क्रॉस रोड फॉर मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया फॉर साउथ एशिया. समझ आइए आजरा? Are you all getting the point? How I explained your location? What was it before this scenario in 1947 and what is now?
समझ गए? तो 5 न्यूक्लियर कंस्ट्रक्टिव पावर्स एक ही जगह पे दुनिया में कहीं हैं? आप मुझे कोई ऐसे मुल्क बता दें जो 5 कंट्रीज हों, पांचों के पांचों न्यूक्लियर हों और बॉर्डर शेयर करते हों, और उनके पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन भी हो। रशिया साइज में सबसे बड़ा कंट्री है, इंडिया पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कंट्री है, चाइना इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे बड़ा कंट्री है, राइट? इसके बाद पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री है ओनली। के बाद आ जाए दूसरे मैटर। तो ये मैटर करती है, लोकेशन आपकी फॉरेन पॉलिसी में मैटर करती है। यू आर इम्पोर्टेंट फॉर अमेरिका, यू आर इम्पोर्टेंट फॉर चाइना। China want to complete its BRI through CPEC as a flagship project. China want to complete CPEC as a flagship project of BRI, and you are providing alternates. You are providing an excellent and effective alternate of South China Sea route to China. So clear, my dear. So it's a very, very important location in this scenario. So America do not want you to lose. America do not want to lose. China has made you a strategic partner, and Islamic countries idealize you as the strongest army and only Islamic nuclear power. ये बातें ऐसे लिखनी है, अगर इशू हो तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, राइट? सो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इंपॉर्टेंट किस तरह हो गए हैं। अगली लोकेशन कौन सी है जो इस पे इम्पैक्ट करती है आपको? आगे बता दें, लोकेशन समझ आ गई आपको? और क्या इम्पैक्ट करता है? दूसरा जो आपका मिलिट्री पावर, अगला जो है वो मिलिट्री पावर आपको इम्पैक्ट करता है ना? अगर आपकी मिलिट्री पावर स्ट्रांग है, दैट इज respect you and mostly take favor from you for the security issues, or just like you supported Saudi Arabia, UAE, and even Qatar on their security issues many times and sent troops as they were needing your troops. Whenever they were in need of your troops, you helped them and bailed them out.
from their security issues. The Pakistan Air Force is helping Saudi's Air Force. Pakistan Air Force operated Saudi Air Force, Jordan Air Force, and Syrian Air Force in Arab-Israel wars. So still this time, as I'm talking to you, your general Rahil Sharif is leading the military of the Islamic countries in Saudi Arabia, right? नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? और कौन सा पॉइंट है जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में इम्पैक्ट करता है? नैयर जनरल रहेल शरीफ क्या लीड कर रहे हैं ना मुस्लिम आर्मी को डेवलप बाय मुस्लिम आर्मी अलायंस जो है डेवलप बाय सऊदी अरेबिया. इसके अलावा मैंने आपको अरब इसराइल वॉर में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑपरेट किया है सीरियन एयरफोर्स को. सऊदी अरब यमन वॉर में 1970s में पाकिस्तानी फोर्सेस ने ऑपरेट किया है एयरफोर्स ने सऊदी एयरफोर्स को. गल्फ वॉर में पाकिस्तान फोर्सेस जो हैं 70,000 ट्रूप्स पाकिस्तान से गए गल्फ वॉर के दौरान टू सिक्योर होली सैक्रेड प्लेसेस. होली एंड सैक्रेड प्लेसेस ये लिखने नैयर होली और सैक्रेड प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान से 70,000 ट्रूप्स गए और उनको हमने नाम दिया खादमैन खादमीन शर्फ खादमैन हरम हरमैन शर्फ. इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको इम्पैक्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी में? लीडरशिप एंड आइडियोलॉजी क्या ख्याल है आपको इम्पैक्ट करता है? तो you can give the example of Zulfikar Ali Bhutto, जी भुट्टो. और आप मुजीबुर रहमान के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि एक लीडर ने किस तरह पोर्ट्रे किया और और भुट्टो ने किस तरह पोर्ट्रे किया एज पोर्ट्रे टू पाकिस्तान एज अ लीडिंग कंट्री इन इस्लामिक वर्ल्ड.
जब एक लीडर आता है तो वो आइडियोलॉजी लेके आता है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तैयब बुर्दगान केम एंड they become the reason for the rise of Turkey. Mahathir Mohamad become the reasons for the development of and the rise of Malaysia as economic tiger of Asia. President Putin ideology of President Putin ideology of rising of Russia helped Russia to become more powerful. So leader matter in foreign policies due to their decision making. So clear? So leaders shape the foreign policy. Leader identify the foreign policy. Leader define the foreign policy. And sometimes leader design the foreign policy. For example, if Imran Khan will come back, what do you think? What will happen? And how he will run the foreign policy? How will he lead the foreign policy? How will he be effective to make foreign policy of Pakistan very effective? So clear, my dear? Leaders matter, and there's a lot of examples for that. As I've mentioned you, last 3-4 examples. नैयर ये लिखनी है तैयब बुर्दगान, महातीर मोहम्मद, नेल्सन मंडेला, प्रेसिडेंट प्यूटन, इन्होंने अपने अपने कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी को इफेक्टिव कर दिए. अच्छा, आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजी इम्पैक्ट. नैयर जो मैं बता रहा हूँ ये लिख लिया करो इस तरह जैसे तुम बुलेट्स लिख रही हो. एक एक एग्जांपल बाद में बच्चों को समझ ही नहीं आए. बुराई साहब बाद में आपको लिख देगा ये, बाद में ये थोड़ा सा उसमें आ जाएंगे. इंटरनेट क्यों स्लो है भाई? कोई और आ जाए टाइपिंग में जिसका नेट ठीक हो. डॉक्टर उजैर, आई थिंक यू कैन टाइप इट. अगर कोई लिखता जाए ना साथ साथ मैं लिखवाता जाऊंगा. आपके नोट्स भी हो जाएंगे, लेक्चर भी हो जाएंगे. जो चीजें नहीं लिखनी वो बता दूंगा, जो समझानी है. जो लिख सकते हैं वो बता दूंगा ये लिखनी है. तो हम बात क्या कर रहे थे कि लीडर तो इम्पैक्ट करता है. लीडर इम्पैक्ट करता है फॉरेन पॉलिसी को, ठीक है. लेकिन क्या आइडियोलॉजी भी इम्पैक्ट करती है फॉरेन पॉलिसी को? सही. हाँ ठीक है, मारिया ने लिखती है तफसील में.
हम बात क्या कर रहे थे, आइडियोलॉजी की भी अगर बात करें तो आइडियोलॉजी भी फर्क डालती है। फॉर एग्जांपल तालिबानाइजेशन is the movement of nativism. Talibanization is a movement of nativism. And Khomeini regime, जी डॉक्टर ज़ैर, Khomeini regime को देख लें। Khomeini came and they changed their foreign policy that was led by Raza Pahlavi in Iran. So after Khomeini overcome in Iran, his ideology prevailed in Iran and Iranian foreign policy. So what you got finally, Iran faced sanction from the world, और उस सैंक्शन फॉरेन पॉलिसी की वजह से ही उसको सैंक्शन लगे हैं। और ईरान की आइडियोलॉजी ने पूरे ईरान के 40 साल से बंद कर दिया है। तो सम टाइम आइडियोलॉजी आपके गले पड़ जाती है और वो इम्पैक्ट करती है नेगेटिवली। इसी तरह कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी थी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी प्रिवेल करती गई। बाद में कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी आई और उसने काउंटर कर दिया, खत्म कर दिया कम्युनिज्म को। तो आइडियोलॉजी मैटर करती है फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा। डॉक्टर उमैर समझ आइए जरा। अगर आप पाकिस्तान इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दे अपने मुल्क में तो आपकी फॉरेन पॉलिसी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तब्दील होंगे कि नहीं होंगे? बहुत हद तक तब्दील हो जाएंगे, राइट? सो दैट्स व्हाई आइडियोलॉजी इम्पैक्ट करती है और ये आइडियोलॉजी हमेशा लीडर लाते हैं। सो दैट्स व्हाई लीडर एंड आइडियोलॉजी आप एक ही साथ डिस्कस करें। अब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज एज ए होल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी, लेकिन शायद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में इनका रोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं लोकेशन के साथ तो वो फिर ठीक है। नेचुरल सोर्सेज एंड लोकेशन इटसेल्फ इज अ नेचुरल सोर्स। जो गवादर, देन वाटर, अरेबियन सी, ये भी तो वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स है, ज्योग्राफी एक नेचुरल रिसोर्स है। तो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप नेचुरल रिसोर्स के को आप अगर लेके जाते हैं माइनिंग के अंदर, आप लेके जाते हैं मिनरल्स के अंदर, आप लेके जाते हैं एनर्जी से कनेक्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से, सो इसमें भी आप देखें कि अरब कंट्रीज एंड मिडिल ईस्ट स्टेट्स are running their foreign policy on the behalf of their natural resources. Qatar is a very important country and considered one of the soft state, having soft image. So Qatar has made this soft image due to its hydrocarbon resources and highly quality of liquefied gas. So कतर की सारी इंपॉर्टेंस उसके नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से है। सेम केस विद नॉर्वे, सेम केस विद सऊदी अरेबिया।
तो क्लियर माय डियर। तो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ये मैटर करते हैं चीजें। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ अभी भी ऐसा मारिया, इसे भी ऐसा करूं। अच्छा, तो सिंपल बात क्या है, अभी सिंपल बात यह है कि इंटरनल डिटर्मिनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं एज ए होल। तो इंटरनल डिटर्मिनेंट वर्क लाइक अ इम्यूनिटी ऑफ द स्टेट। लिख लें ये लाइन, इंटरनल डिटर्मिनेंट इम्यूनिटी ऑफ द स्टेट के तौर पर काम करते हैं। You are stronger in internal determinants, so you will be stronger in foreign policy. And the negative impact of other states' foreign policy on you will not be effective against you. So दूसरी फॉरेन पॉलिसीज का नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ेगा बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर इंटरनल डिटरमिनेंट्स। जी समझ आ गए। तो यहां तक समझ आ गया। तो इंटरनल डिटर्मिनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी भी है और आपकी फॉरेन पॉलिसी को इफेक्टिव भी करते हैं। और अगर ये वर्किंग में हो, अगर ये बहुत अच्छे हो इंटरनल डिटर्मिनेंट्स, तो एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स का नेगेटिव इम्पैक्ट भी स्टेट पर नहीं आता। So internal determinants are directly proportional to the effectiveness of your foreign policy. आप एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स की लिस्ट लिख लें। नंबर 1, इंटरनेशनल लॉ।
Number two, world public opinion. Number three, reaction of the state. Number four, non-state actor. Non-state actor. Clear? International law, world public opinion, reaction of the state, non-state actor. वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। तो आगे चलते हैं। अब इंटरनेशनल लॉ इम्पैक्ट करता है फॉरेन पॉलिसी को। फॉर एग्जाम्पल, one cannot violate international law as it is pursuing its national interest. आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए किसी और कंट्री के रिसोर्सेज को कैप्चर कर ले। वो अपने ही कंट्री के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है, दूसरे कंट्री के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, कैप्चर नहीं कर सकता, प्लंडर नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा करेंगे तो यू विल बी पनिश्ड बाय सैंक्शंस। सिमिलरली, आप अपने ही मुल्क में बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते जो कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट डिसाइड, country cannot decide that we will emit maximum carbon into the atmosphere by using the coal in Bahawalpur districts. अब बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो डेजर्ट है उसके नीचे कोयले की बहुत बड़ा जखीरा पड़ा हुआ। एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कोयल रिजर्व यू हैव। कोयले के बड़े जखायर में से एक आपके पास है, ठीक है? तो अगर आप डिसाइड करते हैं कि वी डू नॉट नीड टू टेक हाइड्रोकार्बन्स एंड वी डू नॉट नीड टू use batteries in coming future, we will take benefit from this coal, right? And we will use this coal for thermal power to get thermal energy. International law will stop you to do this because you cannot emit hydrocarbons into the atmosphere more than the quota that you have, that is given to you. आप एक सर्टन कोटा से ज्यादा कार्बन इमिट नहीं कर सकते हवा में। इससे अगर आप एयर पोल्यूशन करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग
की रीजन बनेगी और आपको दुनिया सैंक्शन कर देगी। आपको दुनिया, इवन वो कंपनियां जो ये काम करेंगी, उनको भी सैंक्शन कर दिया जाए। मारिया, मैंने बताया ना, सर्टन लिमिट है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। क्लियर माय डियर? इसके अलावा ये है जी इंटरनेशनल एक्सटर्न इंटरनेशनल लॉ। अब अच्छा, अभी यू कैन नॉट डू ट्रेड, यू कैन नॉट डू एग्रीमेंट विद ईरान ड्यू टू द sanctions on ईरान। अब अगर आप ईरान के साथ मामलात करेंगे, सो यू विल वायलेट इंटरनेशनल लॉ एंड यू विल बी sanctioned। फॉर एग्जाम्पल, Iran gas pipeline. You are not able to take cheaper oil and cheaper gas from Iran. Otherwise, you will face the sanctions. You have nuclear power, but you cannot provide nuclear power and even technical support to this issue to the other countries because you will violate international law. That's why Abdul Qadir was facing sanction. Abdul Qadir Khan network was facing sanctions, including Abdul Qadir. American alleged it, international Baradri alleged Abdul Qadir Khan network for supporting Iran and Libya and even North Korea, and they sanction us. उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान इस मटेरियल को और इस नॉलेज को ट्रांसफर कर रहा है, इन कंट्रीज को बेच रहा है, तो इस बिहाफ पर उन्होंने हमारे इदारों को सैंक्शन कर दिया। सो यू गॉट द पॉइंट। आप ईरान से गैस क्यों नहीं ले सकते? आप ईरान से तेल क्यों नहीं ले सकते? बताइए। इंटरनेशनल लॉ। अब नेक्स्ट पे आ जाए। एक और प्रोस्पेक्टिव है जी, इट इज लिबरलिस्ट प्रोस्पेक्टिव एंड मोस्टली इफेक्टिव। मैंने आपको बताया ना वर्ल्ड ऑर्डर। So, according to recent world order, the realists have a different approach of that. Realists have a different approach of that. According to realism, these all international rules and regulations only applicable on the developing countries, on the weak countries. Stronger countries do not care for these sanctions. For example, Iran and
China having a relation and investing in each other, China having deals with Iran, China facing sanction but have no impact on the foreign policy. ईरान और चाइना के ताल्लुकात देख लें, चाइना ने ईरान से रिलेशन डेवलप कर लिए हैं और अमेरिका ने उनको सैंक्शन कर दिया है चाइना को, दैट इज कॉल्ड काटसा। कौन सी सैंक्शन लगी हुई है मारिया? काटसा, काटसा सैंक्शंस लगी हुई हैं। अब इन सैंक्शन से ईरान जो है वो तो इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन चाइना के ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं है और उसकी फॉरेन पॉलिसी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। CATTSA, काटसा। तो क्लियर, तो ये भी कहते हैं कि जो ये जो लॉज है, फॉर एग्जांपल नाउ इसराइल, Israel is violating international law, killing the children, doing genocide of Palestinian people. But you will see there are no sanctions on Iran. Sorry, there's no sanctions on Israel. अब उसके ऊपर सैंक्शन नहीं है, उसकी क्या वजह है? अच्छा, एक इसके ऊपर ये भी लिख रहे कलेक्टिव अलायंसेस, एक नंबर मैंने आपको बताया ना, 4 है, 5वां लिख रहे कलेक्टिव अलायंसेस एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट में। तो इसराइल पे इंटरनेशनल लॉ वायलेट अमल कर रहा है, सैंक्शन बताएं, उसकी फॉरेन पॉलिसी पर इम्पैक्ट कर रहा है, बताएं। तो रियलिस्ट स्कूल ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ डिड नॉट एग्जिस्ट। इंटरनेशनल लॉ डिड नॉट एग्जिस्ट, ये उनका थॉट है। क्लियर माय डियर? ये सिर्फ कमजोरों के खिलाफ लॉ है, ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के खिलाफ लॉ है। तो यहाँ क्या होता है, माइट इज राइट। अब इसी तरह आप इंडिया को देख लें, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ कश्मीर should be solved through the opinion of Kashmiri people, through plebiscite, through the rule of determinant. But international brotherly and international law is not able to do something or to bound India to settle Kashmir or to slender Kashmir according to the opinion of Kashmiri people.
मारिया ये वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन नहीं पढ़ा रहा, अभी तक मैं वही पढ़ा रहा हूँ। ये सब कुछ क्या है, इंटरनेशनल लॉ की बात हो रही। ठीक हो गया। तो कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं हो रहा अगर इंटरनेशनल लॉ इम्पैक्ट करता है, बताएं। अब इसमें अगला पॉइंट आपको ये बेहतर, सब इसका जवाब क्या है, इसका अगला पॉइंट वो क्या है, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन एंड रिएक्शन ऑफ द स्टेट। ये आप इसको समझाएं। तो इंटरनेशनल लॉ रियलिस्ट कहते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, इसराइल की एग्जांपल भी दी है मैंने मारिया, और इंडिया की एग्जांपल भी दिया, चाइना, इसराइल एंड इंडिया। तो अब इनके ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा इंटरनेशनल लॉ का, वो खुद वायलेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, अच्छे इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, इसराइल की एग्जांपल दोबारा ले लें। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन इज अगेंस्ट द इसराइल एंड गेटिंग वर्स अगेंस्ट इसराइल। हाँ, अभी सेक्रेटरी, यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी हैं, यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि मेरा सबसे नापसंदीदा मुल्क दुनिया में इसराइल है। तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर इसराइल के खिलाफ सेंटिमेंट्स हैं और पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। Am I right? But world public opinion is not able to shape the foreign policy of the other states. It is doing a very slight impact and very slow impact. So both slow और slight impact ये कर रही है। लेकिन there is no effective impact on the foreign policy of the countries, even on the Israel. वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन इसराइल पे कोई इम्पैक्ट डाल रही है क्या? उसने अपने हमले रोके? उल्टा उसने अपने हमलों को मैक्सिमाइज कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है टुवर्ड्स लेबनान, टुवर्ड्स सीरिया, ईरान एंड यमन। वो इसराइल फलस्तीन के ऊपर हमला कर रहा था, हमास को टारगेट कर रहा था, उसके बाद उसने क्या किया, जैसे ही वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन बढ़ती गई इसराइल के खिलाफ, इसराइल ने अपने दायरा को भी, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को, सर्कल ऑफ वार को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। राइट? तो उसका इम्पैक्ट तो कोई नहीं पड़ा, बल्कि मैक्सिमाइज हो गई, मल्टीप्लाई हो गई वॉर्स। यहां तो लगता है कि वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन का इम्पैक्ट उल्टा पड़ गया। सो क्लियर माय डियर? तो ये है एक्चुअल बात। अब जी क्या वजह है जी, फिर हमने इसको वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन कैन नॉट इम्पैक्ट, आखिरी अहम बात लिखनी हमारी ये वाली जो मैं बता रहा हूं, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन कैन नॉट इम्पैक्ट, कैन नॉट इफेक्ट until state change their behavior, their stance, their reaction. So world public opinion has no matter until, yes, world public opinion actually help the states or pressurize the states to change their reactions. वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन मुख्तलिफ स्टेट्स को मजबूर करती हैं कि वो अपना स्टांस बदलें। अब फलस्तीन के इशू के ऊपर देख लें आप, लेकिन अगर वो स्टेट अपना स्टांस नहीं बदलती तो इसका फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता किसी की। जैसा कि आप
पाकिस्तान की पब्लिक फलस्तीन के हक में है या इसराइल के हक में है? डेफिनेटली फलस्तीन के हक में है। हमने प्रोटेस्ट भी किए, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट भी हुए। अभी पिछले दिनों 7 तारीख को क्या हुआ था, बड़ा एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई और पूरी स्टेट नैरेटिव है, लेकिन स्टेट ने इटसेल्फ डिड नॉट रिएक्ट अगेंस्ट इसराइल। क्या हमारी स्टेट इसराइल के खिलाफ रिएक्ट कर रही है? क्या हमारी स्टेट रिएक्शन दे रही है? तो रिएक्शन ऑफ द स्टेट, मैं नेक्स्ट तीसरे पॉइंट पे चला गया हूं। तो जब तक रिएक्शन ऑफ द स्टेट नहीं होगा तब तक वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन की इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। तो असल की क्या है? द की इज रिएक्शन ऑफ द स्टेट। सो स्टिमुलेशन जरूर है वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, लेकिन फाइनल इफेक्टिवनेस नहीं है उसके अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चे आप? तो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता जब तक स्टेट अपने रिएक्शन में बदलाव ना लाए। मिसाल हमारे अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान स्टेट एक रिएक्ट करे इसराइल के खिलाफ। लंदन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो लंदन की गवर्नमेंट, इंग्लैंड की गवर्नमेंट रिएक्ट करे इसराइल के खिलाफ अपने सेंटीमेंट, लोगों की सेंटीमेंट के मुताबिक। इसी तरह अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो अमेरिका भी इसराइल के खिलाफ रिएक्ट करे अकॉर्डिंग टू द सेंटीमेंट ऑफ द पीपल एंड मेजॉरिटी ओपिनियन, लेकिन नहीं होता। तो रिएक्शन ऑफ द स्टेट मैटर नहीं करता अंटिल स्टेट रिएक्ट। सो रिएक्शन ऑफ द स्टेट मैटर करता है। सो क्लियर माय डियर? और अब आ जाए नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर क्या है बेटा? नॉन स्टेट एक्टर मीन different entities different entities that are not owned by any state. Different entities that are not owned by any state. For example, pressure groups, terrorist organizations, non-government organizations, NGOs, multinational companies, MNCs, multinational companies, multi-cooperative companies, and business magnates, social media. These are non-state actors. So non-state actor can impact the foreign policy of developing countries, not the developed countries. For example, Pakistan will not recognize Afghanistan Taliban regime until Taliban will conduct meaningful operation against TTP. So our relations are dependent, our foreign policy is dependent on how Afghan Taliban behave, whether they are going to conduct a meaningful operation against TTP or not. So TTP is non-state actor and Taliban itself are the non-state actors. तो हमारे उनके साथ जो रिलेशन है वो इस बात पर मुनहसर है कि अगर हम उनको स्टेट एक्टर मान लेंगे, तालिबान को लिस्टिमेट कर लेंगे, अगर वो हमारे यहाँ होने वाले नॉन स्टेट एक्टर के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे।
सो यहाँ नॉन स्टेट एक्टर की वजह से ही अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। अलकायदा की वजह से अमेरिका के तालिबान से रिलेशन खराब हुए और 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर स्टार्ट की गई। सो अलकायदा बिकम द रीजन फॉर द चेंज इन फॉरेन पॉलिसी इन अफगानिस्तान एंड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। अलकायदा की वजह से हमारी भी फॉरेन पॉलिसी बदलनी पड़ी हमें। हमने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया हुआ था, हमने उनकी रिकॉग्निशन को कैंसिल कर दिया और उनके खिलाफ अमेरिकन को लॉजिस्टिक सपोर्ट दी इन वॉर ऑन टेरर। सो क्लियर माय डियर। तो नॉन स्टेट एक्टर इंपैक्ट करते हैं, लाइक सोशल मीडिया भी इम्पैक्ट करता है, करेंसी करेंसी भी नॉन स्टेट एक्टर है, डिजिटल करेंसी। सो ठीक है बेटा, अभी ब्रेक करते हैं, 15 मिनट पे आएंगे, ठीक है, 4:15 पे, और उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। राइट, मारिया लिख दो, 4:15 विल कम बैक। 4:15, 4:15, राइट।
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ गई है स्टूडेंट को? अच्छा यार, वो नमाज का इशू चल रहा था ना, हमने ब्रेक बड़े गलत टाइम पे कर दिया बच्चों, है ना? तो अजान और नमाज का प्रोसेस शुरू हो जाता है ना इस वक्त, तो लेट इसलिए हो गया। समझ आई है मेरी बात? सो हमें ब्रेक करनी चाहिए थी 4:15 पे। समझ आ रही है? मट्टी की दीवार यार, तुम्हारी क्लास एक तो छोटी है, दूसरा कसम है आप लोगों को कि आप रिस्पॉन्ड कर दें टाइम टू, हैं? उंगलियां हिला लिया करो, कुछ नहीं होता भाई। नहीं तो 1 मिनट करते हैं, कोऑर्डिनेटर इनका माइक ऑन करो सबका। ये तो छोटी क्लास है ना, कोऑर्डिनेटर माइक ऑन दे, माइक दे इनको। तो अगर आपको लिखने में तकलीफ है तो बोल तो सकते हैं माइक ऑन करके। यार क्लास जब आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे ना तो बोरिंग हो जाएगी ना, आपके लिए भी मेरे लिए भी। और दुनिया में ये एक एनालिसिस है कि ऑनलाइन क्लास पढ़ाना मुश्किल होता है, राइट? क्योंकि उसमें लेस इंटरेक्शन होता है, मिनिमाइज होता है। ऊपर से माशाल्लाह आप सारे ऐसे हैं, आप सारे इस क्लास में ऐसे बच्चे हैं कि आपको रिप्लाई फौरन नहीं करते, कीपैड के साथ फ्रेंडली नहीं है, आई थिंक ऐसे है। सो माइक ऑन करें जी, माइक ऑन कौन करेगा? चले खान साहब करो। जी खान साहब, समझ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है समझ। तो कोई क्वेश्चन हो, अब आप अपना माइक ऑफ कर सकती हैं, माइक ऑन कर सकती हैं, आप माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकती हैं। चले इंटरेक्शन इस तरह बढ़ेगा, ठीक है? जी सर। मारिया जफर, और कौन है हमारा? कोई लड़का भी है कि नहीं इसमें? मैं ढूंढता रहता हूँ कि कोई लड़का भी है। डॉक्टर उजैर था आई थिंक, वो किधर गया? उजैर, वेयर द हेल आर यू? हैं? माइक ऑन करो भाई, माइक ऑन करो, तुम्हारी आवाज भी सुनूं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, बोलते क्यों नहीं हो भाई आप लोग, हैं? सर एक तो नेट का भी इश्यू चल रहा होता है, इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है। अच्छा, समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन हो अब आपको, आप माइक पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर, ओके सर। हाँ, किसी और को कोई क्वेश्चन करना हो जो पीछे पड़ा है, मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन पिछले से मुतलका हो आपका? हमने फॉरेन पॉलिसी कंक्लूड कर दी है, तो क्वेश्चन पूछ लें क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने कंक्लूड किया है। किसी का कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? या फिर गो हेड करें। जी जी खान साहब बोलें। माइक की इजाजत, माइक ऑन करके कर लिया करें, हैंड रेज कर सकते हैं आप। तो आज हम पढ़ जा रहे हैं पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया रिलेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर कलेक्टिव अलायंसेस वाले में क्या आएगा? अच्छा, हिंट दे वो दीजिएगा। रह गया है, हाँ जी। कलेक्टिव अलायंसेस रह गया, वेरी गुड। कलेक्टिव अलायंसेस में आएगा बेटा, जो हमारे दुनिया में आपने देखा है ग्लोबल अफेयर्स के अंदर, देयर आर डिफरेंट अलायंसेस इन द वर्ल्ड। फर्स्ट फर्स्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, वर्ल्ड वॉर हुई तो उसमें कोई मल्टीपल कंट्रीज लड़ रहे थे, और उसमें जी सर। एक तरफ 5 7 8 कंट्रीज, दूसरी तरफ भी 5 4 कंट्रीज मिलकर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लें, उसमें भी जर्मनी दोनों वॉर्स में था, तो जर्मनी के जो अलाइज हैं वो उसके
अलायंसेस हो गए। याद है आपको? उसमें उन कलेक्टिव अलायंस क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर और जर्मन अलायंस रहे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर वही अलायंस नहीं रहे, फिर वो टूट गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अलायंस था। तो आपको याद होगा एक टर्म यूज हुई एक उसे हम कहते थे अलाइज, और एक टर्म होती थी एक्सेल, एक्सिस, एक्सिस ऑफ पावर, और एक होता था अलाइज। तो वर्ल्ड वॉर के अंदर ये दो टर्म्स यूज होती थी, ठीक है। अच्छा, बाद में ये तो जब स्टेट का कॉन्सेप्ट ये तब हुआ जब इंपायर्स थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तब हुई जब इंपायर्स के अलायंसेस हुआ करते थे। इंपायर्स के दौरान स्टेट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट बाद में इमर्ज हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें हम टोटली इंपीरियलिज्म से निकल गए, कॉलोनियलिज्म से निकल गए, मर्केंटलिज्म खत्म हो गया। तो हम आ गए नए इरा के अंदर जिसमें स्टेट टू स्टेट हम चल रहे हैं, जिसमें ये रूल खत्म हो गया कि आप जिस इलाके को फतह करेंगे वो जोरे बाजू पर वो आपका हक है उसके ऊपर। पहले ये कानून होता था एम्पायर्स के अंदर, अब ये नहीं है। अब ये है कि आपकी डिफाइंड बाउंड्रीज हैं, आपकी टेरिटरी है, डिफाइंड बाउंड्रीज हैं उसकी, ठीक है, और उसमें लोग रहते हैं, पीपल हैं, स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है। और तीसरा उसके अंदर क्या है, उसकी सोवरेनिटी है। स्टेट में ये चीजें आती हैं, पीपल, टेरिटरी, सोवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। तो अब ये इसे कहते हैं नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, मॉडर्न स्टेट कॉन्सेप्ट। अब जब मॉडर्न स्टेट डेवलप हुई तो फिर इन्होंने अलायंसेस, कलेक्टिव अलायंसेस बनाना शुरू कर दिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप कह सकते हैं इस वक्त जो अलायंसेस हैं, पाकिस्तान और चाइना एक स्ट्रेटेजिक अलायंस में है, ठीक है। इसी तरह नेटो एक बहुत बड़ा अलायंस है, नेटो, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सिक्योरिटी अलायंस है। इसी तरह अगर आप इसी के कंपेयर करेंगे तो एक वारसा अलायंस था, वारसा, जिसे नेटो के मुकाबले में डेवलप किया सोवियत यूनियन ने। बाद में वारसा कोलैप्स कर गया और अभी है सिस्टो, सिस्टो, CSTO, सिस्टो। इसका मतलब है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ लोग इसको ना एज अ अजरा मजाक या अपने मेमोरी के लिए इसको कहते हैं सेंट्रल एशियन सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज शामिल हैं सिस्टो के अंदर। अच्छा, तो नेटो भी एक सिक्योरिटी अलायंस है। अभी आपको, अब मैं इस्लामाबाद से एक लेक्चर ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस्लामाबाद में कुछ दिनों बाद एक अलायंस का बहुत बड़ा समिट है, दैट इज SCO, शंघाई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ये एक इकोनॉमिक अलायंस, जेंट इकोनॉमिक अलायंस बनने जा रहा है G7 और G10 का मुकाबला करने के लिए। G10 वो भी इकोनॉमिक अलायंस था, अब G7 है, वो G10 भी है, G7 भी है, G20 दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक अलायंस, वो अलायंस नहीं है G20, तो आप समझे ग्लोबल अफेयर है। तो समझ आ रही है आप, ये होते हैं सिक्योरिटी अलायंसेस, ये होते हैं अलायंसेस। अच्छा, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक अलायंस है चाइना का, इंडिया स्ट्रेटेजिक अलायंस है अमेरिका का। यू गॉट द पॉइंट? तो ये जो अभी अभी जो इसराइल है, इसराइल के अलायंस में कौन आता है? यूके, जर्मनी, फ्रांस एंड अमेरिका। ये उसके अलाइज फोर्सेस जो थी किसी दौर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, अलाइज फोर्सेस जो थी, अब वो किसका अलायंस बन चुकी हैं इस वक्त? इसराइल का। तो इसलिए देखें, इसराइल के अलायंसेस क्योंकि बड़े स्ट्रांग हैं, इसलिए उसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ इंपैक्ट नहीं कर रहा, वो इंटरनेशनल लॉ को कंटिन्यूसली वायलेट करता जा रहा है और उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। यू गॉट द पॉइंट? लेकिन आप यह जरा ये देखें कि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला कर दिया है,
लेकिन क्या रशिया टर्की के ऊपर हमला कर सकता है? मुझे ये बताइए, क्या वो कभी करेगा टर्की के ऊपर हमला? क्या रशिया यूके पे हमला करेगा? क्यों नहीं करेगा? कलेक्टिव अलायंस, क्योंकि टर्की इज अ पार्ट ऑफ नेटो। नेटो जी, नेटो का मतलब अगर आप नेटो के एक कंट्री को भी अटैक करेंगे तो नेटो के सारे 45 प्लस कंट्रीज आप पर अटैक कर सकते हैं, और वो करेंगे, मिलकर करेंगे, वो आपके खिलाफ लड़ेंगे। सो ये है जी अलायंसेस। हाँ सर, समझ आ गई है? अब आ जाए रिलेशंस के ऊपर, हम बात करते हैं पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना रिलेशन। तो अब आपने लिखना है, कौन लिख रही थी? मारिया, मारिया जफर, राइट? जी, स्क्रीन शेयर अलाउ कर दें कोऑर्डिनेटर बिलाल, मिस्टर बिलाल। मारिया जफर को आपने स्क्रीन देनी है। एंड वेरी गुड बिलाल, यू आर द एक्टिव मैन। बिलाल एक्टिव रहते हैं, पूरे लेक्चर सुनते हो आई थिंक बिलाल आप, है ना? कोऑर्डिनेटर ये वैसा है जो मुसलसल एक्टिव होता है क्लास में। आई थिंक बिलाल सुन रहे हो, हैं? लेक्चर सुन रहे हो? अगली बात पे आते हैं। अच्छा, मारिया को बताओ बिलाल कि ये कैसे स्क्रीन शेयर करे। जी अस्सलाम वालेकुम मारिया, आपके अगर आप मोबाइल यूज़ कर रही हैं तो नीचे ऑप्शन आ रही होगी शेयर स्क्रीन की। हो गई है सर? हो गई? हुई थी, फिर गायब हो गई आई थी। हाँ, हो गई है। गुड, गुड। अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान चाइना इंडिया रिलेशन। आगे में, आगे आप लिखेंगे अ कंपैरेटिव एनालिसिस, ब्रैकेट में लिखेंगे अ कंपैरेटिव एनालिसिस। अब मैं इनको मिला के क्यों पढ़ा रहा हूं, इसकी रीजन बताता हूं। बिकॉज जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, दे आर इन इंटीग्रेटेड वर्जन, दे आर आस्किंग होलिस्टिक पर्सपेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशन। सो फॉरेन पॉलिसी का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। आप क्वेश्चन जितना ज्यादा रेज करते हैं आपको फायदा होता है। क्वेश्चन रेज करने से आपकी वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू ओपन माइक। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो, कोई भी रिलेशन पे आ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा कि किसी एक कंट्री को स्पेसिफाइड वो कर दें कि इस कंट्री से हमारे रिलेशन जो है। अगर वो कर भी देना तब भी आप उसको डील नहीं कर सकते until you should know the knowledge of other countries and how they are dependent on each other. So different countries के रिलेशन, अगर हम इंडिया से कोई रिलेशन डेवलप करते हैं तो इसका ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट जो है वो चाइना के साथ हमारे रिलेशन पर भी पड़ता है, अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन पर भी पड़ता है। तो इस वजह से हमें इंटीग्रेटेड वर्जन में पढ़ना पड़ता है। बेस्ट यही है कि हम इंटीग्रेटेड वर्जन में पढ़ें ताकि हम एक होलिस्टिक एंड साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन को पढ़ें और उससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी हमारे अंदर बढ़ जाएगी। सो क्लियर? अब आ जाते हैं इन 1947 लिखें, एज पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस वी गॉट टेंस रिलेशन विद इंडिया and not establish the ideal relation with China initially. So reasons for these factors and developments, reasons for these developments, number one लिखें जी। तो
क्या रीजन थी कि हमने चाइना के साथ भी हमारे रिलेशन जो है वो इतने आइडियल डेवलप नहीं हुए जैसे आज हैं, और इंडिया के साथ भी टेंस रिलेशन डेवलप हो गए? रीजंस लिखने जा रहे हैं, ठीक है। नंबर 1, China was observing mother tongue revolution, so it was not good time for Pakistan to establish a relation with China immediately. So we opted the policy of wait and see. Number 2, Mao Zedong took control in 1949, took control of Beijing in 1949, and we recognized them swiftly. तो 1949 में, आगे इसमें अगर आपने ये लिखा है मायरा तो आगे लिखें इन 1949। इस नंबर 2 पॉइंट के आखिर में लिखने तो आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो इन 1949 मौजे तंगम पीआरसी, वी रिकॉग्नाइज्ड पीआरसी, आगे लिखें रिकॉग्नाइज के आगे शॉर्ट फॉर्म में ये बना लें पीआरसी, वी रिकॉग्नाइज्ड पीआरसी ब्रैकेट, हाँ जी, पीआरसी मीन है पब्लिक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, मौजे तंग रिजीम को कहते हैं पीआरसी। हाँ जी कोराई, वेरी गुड कुराई, यार स्पेलिंग इनको बताते जाओ। कुराई को आपने देखना है मारिया के स्पेलिंग के कोई टर्म्स आ जाए तो वो आपको हेल्प करेगा, राइट। तो कुराई आप ये स्पेलिंग इसको बताते जाए, ये बड़ा ऑकवर्ड है कि मैं इस बात जहां बैठ के स्पेलिंग बताता हूँ, ठीक है। नंबर 3, चाइना brought communism, PRC brought communism and replaced capitalism, while Pakistan continue with the capitalist system. Pakistan continue with the capitalist system, merger with Islamic ideology. So capitalism and Islamic ideology was far away from the communism. Number 4, India emerged on globe as a rich country. Pakistan emerged on a globe as a poor country. India emerged on a globe as a rich country, while Pakistan as a poor country. And China replaced capitalism to end the poverty, extreme poverty of the people of China.
as China wanted to bring the people up to the line of poverty, they prefer a rich state as compared to poor state as a friend. समझ आई है? हाँ जी, उजैर समझ आया? अब चाइना चाह रहा है कि हम अपनी लाइन ऑफ पॉवर्टी से लोगों को ऊपर लाएं, लेकिन उसके सामने जो दो कंट्रीज हैं एंड तो वो क्या उसको सूट करता है, अमीर कंट्री से ताल्लुक रखना है या गरीब से? गरीब तो खुद भी हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी थी चाइना के अंदर, सो दे प्रेफर एंड अच्छा सो तो उन्होंने प्रेफर किया कि वो एक बेहतर कंट्री से, बेहतर इकोनॉमी से कनेक्शन करें। अब इसी के आगे लिखें, देयर वाज नो चांस फॉर चाइना टू डेवलप गुड रिलेशन सेम टाइम विद बोथ कंट्रीज बिकॉज वी वर rival of each other due to Kashmir issue. So clear, my dear? Number 5. China was sharing greater border with India as compared to Pakistan. Number 6. Pakistan joined capitalist bloc that was showing resistance against Mao Zedong regime. So capitalist bloc को हमने ज्वाइन कर लिया और capitalist bloc anti China bloc था. They were doing containment of China. They were against the Mao Zedong regime. Capitalist bloc did not recognize the Mao Zedong regime, and they were supporting anti-Mao Zedong sentiments into China. They were supporting nationalist Chinese into China against PRC. समझ आइए बच्चे? कुराई क्या हो रहा है बेटा कि जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है ना वो नेशनलिस्ट चाइनीज को सपोर्ट कर रहा था अगेंस्ट कम्युनिस्ट चाइनीज, मतलब पीआरसी वर्सेस आरसी। तो कैपिटलिस्ट ब्लॉक आरसी को सपोर्ट कर रहा था। आरसी क्या है? जो आज भी बैठी है ताइवान के अंदर। आज का सिनेरियो पता है आपको ना, ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, ताइवान इशू। सो ताइवान के अंदर जो है आज भी वो आरसी आपको नजर आती है, दैट इज एंटी कम्युनिस्ट एंड एंटी माओ ज़ेडुंग पार्टी। सो क्लियर माय डियर, यहां तक समझ आया है? अच्छा, अगली बात बड़ी मजे की है, लिखें जरा 7 पॉइंट लिखें, आपको समझ आ जाएगी। रीजन 7 रीजन दे दिए मैंने आपको। अब मेरी बात सुन लें, अगर आप मेरे लेक्चर नहीं करेंगे, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, आपको कहीं से भी ये मटेरियल नहीं मिल सकता, ना किसी बुक में है ये। या तो आप फिर पीएचडी करें, 3 मेरी तरह मैंने 2 पीएचडी कर लिए, ठीक है, सीएसएस करने के बाद, या तो फिर आप पीएचडी करें, फिर खुद एनालिसिस डेवलप करें, है ना? डॉक्टर उजैर, तुम कौन से वाले डॉक्टर हो? पीएचडी तो तुम हो नहीं, तुम मेडिकल डॉक्टर हो, हैं? तो फिर आपको 2 डॉक्टर और भी लगाने पड़ेंगे, डॉक्टर क्यूब, है ना?
और वो असल वाले डॉक्टर रोज जाने पड़ेंगे, पढ़ने वाले डॉक्टर, मेडिसिन वाले नहीं, है ना। ये मेडिसिन वाला डॉक्टर एक दफा पढ़ता है जिंदगी में, फिर सारी जिंदगी नहीं पढ़ता, फिर मेडिसिन ही लिखता रहता है? एक दफा FCPS कर लो और बस फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस, मतलब कम लोग होते हैं फिर आगे पढ़ते हैं, PhD करते हैं फिर जाके चीजों में। आगे चलें। तो हम बात कर रहे हैं 7 बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन बताने जा रहा हूं आपको। इसकी जो एक तो चाइना के पास चॉइस ही नहीं है कि वो चूज कर ले दोनों को एक ही वक्त में। दूसरा, चाइना जो है वो कम्युनिस्ट स्कूल को प्रमोट कर रहा था और कैपिटलिस्ट उनको सपोर्ट नहीं करते थे। तीसरा, जो सेकुलरिज्म थी, इंडिया वाज कंसीडरिंग itself as a secular state, and Indian joined non-aligned movement. इंडिया क्या कर रहा है? सेकुलर स्टेट अपने आप को समझता है और उसने अनाउंस किया है और नॉन अलाइन मूवमेंट में जा रहा है। So India was not harmful for China that time. From the other side, Pakistan was portraying itself glorious Islam and glorious Islamic ideology, two nation theory, like we say, al kufru millatum wahida, तमाम काफिर एक कौम है, हम एक अलग कौम है। And on this theory, we were preferring the religious countries instead of atheism and communism. So we joined American bloc. In 1954, Pakistan did defense agreement with Western bloc, and China did friendship treaty with India. तो अब समझ आ गया कि कौन कहां चला गया है। एक और बात भी बताइए मैंने, इंडिया वाज शेयरिंग द ग्रेटेस्ट बॉर्डर विद चाइना एज कंपेयर टू पाकिस्तान। इंडिया वाज ग्रेटर बॉर्डर शेयर करता था। सो ये हैं जी रीजंस। तो कल क्या रिजल्ट निकला फिर देखते हैं जी। अब आ जाए, ये तो आपके साथ चाइना का मामला एड्रेस हो गया। सो नाउ टेंस रिलेशन विद, अब ये आपके साथ कैसे रिलेशन डेवलप हुए? इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना ने आपके कोई मुखालफत में चला गया या आप चाइना के मुखालिफ थे, लेकिन चाइना इंडिया के क्लोज था। इसका पूरे 7 पॉइंट्स का मतलब क्या, आखिर में लिख लो नोट, कि चाइनीज वर क्लोज टू इंडिया एज कंपेयर टू पाकिस्तान बिकॉज ऑफ above stated facts and arguments, logics. So अब जरा पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन, ये तो आपको पता ही है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं नाम बता देता हूं। लिखे रीजंस फर्दर पे आ जाए। बी ए था वो, ए रीजंस थे, बी रीजन में आ जाए। मतलब ये इंडिया के साथ क्या रीजंस है हमारी जी, रीजंस विद इंडिया। सो नंबर 1, रेड क्लिफ injustices. Number 2, water canal water dispute. Number 3, princely state issues. Canal water dispute 1948.
फिर क्या बता रहा हूँ, जरा तेज चलो। क्या नाम है, मारिया जफर लिख रही है या जी? तो नंबर 4 पे आ गया जी, प्रिंसली स्टेट इश्यूज हो गया। नंबर 4 इशू क्या है बेटा? minority rights and refugees. So these were the basic reasons that deteriorated relation with India, relation of Pakistan with India. आप ये आपको याद है या ये आपने पाकिस्तान स्टडी में पढ़ ली हुई है, या मैं आपको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? रेड क्लिफ इनजस्टिस में मेंशन कर देता हूँ, लाइक गुरदासपुर एंड फिरोजपुर Gurdaspur and Firozpur were given to India while these were supposed to be the part of Pakistan according to the principle of boundary commission. Clear, my dear? So गुरदासपुर फिरोजपुर हमें मिलना चाहिए था, दे दिया गया इंडिया को। बाउंड्री कमीशन के फैसले के मुताबिक हमें मिलना चाहिए था। नंबर 2, इसी के अंदर सेकंड पॉइंट ये है, कलकत्ता वाज गिवन टू इंडिया व्हाइल इट वाज सपोज्ड टू बी द पार्ट ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान। तो कैनाल, चलें जी, कम टू द पॉइंट, इसको कमेंट्री कर लेते हैं 1 मिनट में जल्दी से। कुराई अपना माइक खोलो, या बाकी बच्चे भी बता सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका क्या इम्पैक्ट फैक्टर है? पहले पॉइंट का इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, जरा देखते हैं जी, क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा इसका जी? एज वी आर मेंशनिंग दिस पॉइंट्स, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट फैक्टर्स? इसका एपी सेंटर क्या था वो बता दिया, लेकिन इसकी जो वेव्स थी वो कहां तक जा रही थी? देखें इम्पैक्ट फैक्टर क्या था। सो इंडियन फोर्सेस इंटर इन कश्मीर via Gurdaspur because Gurdaspur provided passage to the Indian forces to come in Kashmir. Number 2, and the second reason is also very important because Firozpur given the authority to regulate water resources, given authority to India to regulate water resources in Pakistan. Firozpur waterhead works were very important, that went into the Indian control. And number 3, Kolkata. Kolkata was actually the economic hub of whole subcontinent, and it was industrial zone. It had been capital of subcontinent for a long time, and British made it their colonial headquarters from
19th century. So the biggest British colony was there, biggest British port was there, Calcutta port. The biggest industry and factories were there. So it was one of the metropolitan city of that time, leading the almost major economy of the subcontinent, not only just Pakistan and India, whole subcontinent. So as this area was given to, as this port and this industrial city was given to India as compared to Pakistan, we remain deprived. We become deprived thoroughly for next 24 years. And finally, this thing led to the fall of Dhaka. I mean, Bengalis were growing the agriculture, producing the agricultures and commodities, but their commodities were not used to purchased by the Pakistani government because we were no factory, no industrial units in East Pakistan. So for 24 years, Bengali faced economic deprivations. Their crops did not get good prices and even remain in their fields all the time, mostly time. वो अपने खेतों को आग लगा देते थे जब उनकी बिकती गंदम नहीं बिकती थी, उनकी जूट नहीं बिकती थी, जूट की क्रॉप्स उनकी शुगर केन की क्रॉप्स नहीं बिकती थी बिकॉज हम कैसे खरीद सकते थे, हमारे पास फैक्ट्री नहीं थी और वो फैक्ट्री कलकत्ता में लगी हुई थी. एंड ऑल्सो ड्यू टू द मोनोक्रॉप्स कल्चर ये था कि ब्रिटिश ने यहाँ कई अरसे से मोनोक्रॉप्स कल्चर डेवलप किया था, पूरे रीजन में एक एक फसल होती थी और उसकी फैक्ट्रियां कलकत्ता में थी. फॉर एग्जाम्पल जूट की क्रॉप्स, तो उसकी क्रॉप्स इतनी ज्यादा तादाद में थी, बड़ी क्रॉप्स थी, कोई कंट्री नहीं खरीद सकता था अंटिल उसके पास चेन ऑफ इंडस्ट्री ना हो. और चेन ऑफ इंडस्ट्री मौजूद थी कलकत्ता में, कलकत्ता दे दिया गया इंडिया को. वेल इट वाज सपोज टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान बिकॉज कलकत्ता की जो पॉपुलेशन थी, कलकत्ता एज अ डिवीजन वाज मुस्लिम पॉपुलेशन. लेकिन इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इकोनॉमिकली रिच कंट्री बनाने के लिए वो सिटी इंडिया को दे दिया गया. तो हमारी डिप्रिवेशन स्टार्ट हो गई, डिप्राइव्ड हो गई. इसलिए नेहरू ने कहा था कि पाकिस्तान भीख मांगेगा हमसे कि खुदारा हमें मर्ज कर लो. वी विल डिमांड फॉर रीमर्जिंग सून. यू गॉट द पॉइंट माय डियर. तो रिजल्ट क्या निकला? फॉल ऑफ ढाका. इकोनॉमिक डिप्रिवेशन आई और तो वहां पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलना शुरू हो गई फॉर द राइट, बेसिक राइट्स एंड टू अवॉइड द डिप्रिवेशन. वहां पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुए, उन मूवमेंट्स को हमने मिसमैनेज किया और वहां सिविल वार शुरू हो गई एंड फाइनली लेड टू फॉल ऑफ ढाका. तो क्या समझ आई है कि नहीं? हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट, हवाला क्या देंगे? हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट. हमूद और रहमान कमीशन रिपोर्ट. तो समझ आई है कि नहीं? ये अवेलेबल है, आप किसी भी मार्केट से आजकल लेके पढ़ सकते हैं. तो अब मैं इसका इम्पैक्ट फैक्टर समझ आया आपको इस बात का? मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में चला गया. वी डू नॉट नीड टू गो इन डिटेल because we have to cover the relations, not the history.
राइट। सो वापस आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया आपको मैंने, उस पर चलते हैं। कलकत्ता इकोनॉमिक हब तो हो गया, कि आगे चलें, ऊपर करें जरा स्लाइड्स। अगला पॉइंट क्या बताया था हमने? रेड कलर ऑफ इनजस्टिसेस, जी ये है कैनाल वाटर डिस्प्यूट 1948। कैनाल वाटर डिस्प्यूट 1948 मीन, एज एज आई टोल्ड यू कि वाटर रेगुलेशंस किसके हाथ में चली गई थी? इंडिया के हाथ में चली गई थी, बिकॉज ऑफ फिरोजपुर हेडवर्क्स। सो एज वी फॉट फॉर कश्मीर in 1948, Indians stopped our water in 1948 from Firozpur headworks. We went into International Court of Justice, ICJ, and we got decision in our favor. So we got water through International Court decisions. But water was given to you on condition that you have to accept Indian authority on Firozpur headworks, and you will search an alternate resource instead of relying on this resource permanently. जी हम फाइंड करेंगे alternate resource of water except relying on this resource permanently. So आपको पानी तो मिला लेकिन कंडीशनल था। प्रिंसली स्टेट इशू क्या है? अच्छा ये कहाँ पानी, इसका इन्फ्लुएंस एरिया क्या था? ये किस एरिया में ज्यादा इंपैक्ट कर रहा था? फिरोजपुर हेडवर्क्स, दैट वाज बारी दुआब। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इससे कौन सा एरिया इरिगेट करते थे आप? इरिगेट करते थे बारी दुआब। बारी दुआब was being irrigated by Firozpur headworks. Princely state issue में क्या है? You know, like issue of Kashmir, Junagadh, and Hyderabad. There were more than 567 states, more than 567 princely states. That were supposed to decide their future, whether join Pakistan or India. 67 beta, 67. Kashmiri Raja decided to remain independent, while people of Kashmir decided to go with Pakistan. Majority of Kashmiri were in favor of joining Pakistan. As people started protest against their Raja called help from Indian forces.
and Indian captured the Srinagar. And did security agreement with Raja. Pakistan reacted against this action and supported Pakistan and supported Muslim majority of Kashmir and requested its tribal to support the Kashmiri people in conflict. Indians were not able to fight to counter Muslim tribals, so went into United Nations, made promise to conduct plebiscite in Kashmir as situation will get normalization. Pakistan accepted United Nations request for ceasefire in 1948 and for line of control in 1949. Request of United Nations for ceasefire in 1948 and LOC in 1949. And we are still waiting for plebiscite. तो clear my dear, समझ आ गई है आपको? प्रिंसली स्टेट इश्यूज में ये सबसे पहला इशू था, दैट इज कश्मीर इशू. Hyderabad Deccan decided to go with Pakistan, but immediately captured by Indian forces. Nizam of Hyderabad finally went to United Nations for their independent status. But remain in vain. It all remained in vain. Nawab of Junagadh decided to go to join Pakistan, but Indian forces captured Junagadh and claim Hindu majority over there. So these were injustices that India and Red Cliff did. And these things produces many reasons further for interest, for what you call for trust deficit
and tensions between and with India, between slash with India. समझ आई है बेटा? तो ये इतने बड़े नुकसान आपके हो गए, तो फिर क्या दोस्ती हो सकती है? अच्छा, हैदराबाद officially is not the part of Pakistan now, according to Pakistani political stance. What is the reason, Korai? You still recognize Junagadh as a part of Pakistan. In political map, Junagadh is considered the part of Pakistan still, according to the stance of Pakistan. But Hyderabad is not considered the part of Pakistan according to Pakistani foreign policy. What is the reason? कोराई से पूछा है, उजैर तुमसे पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, किसी को पता हो कि पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक हैदराबाद, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका पार्ट नहीं है इस वक्त पॉलिटिकल स्टांस के मुताबिक, लेकिन जूनागढ़ को आप पाकिस्तान का हिस्सा ही एक्सेप्ट करते हैं आज भी. सो रीजन बिहाइंड इट प्लीज. अब मुझे नहीं पता इसने लिखा कैसे, मैं इसको पढ़ा नहीं है बच्ची ने. मैंने जो बोला है, मैं क्या बोला है समझ जाइए. हैदराबाद सुनने, इसके अंदर जवाब है अगर आपने पढ़ लिखा है, पढ़ा है तो. हैदराबाद के निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद को रन कौन करता था? निजाम ऑफ हैदराबाद. वो फाइनली कहा, पहले तो उन्होंने अनाउंस किया ना कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगी, लेकिन जब इंडियन फोर्सेस ने उनको कैप्चर करने की कोशिश की और कैप्चर कर लिया, तो उन्होंने अपनी प्ली चेंज की और वो यूनाइटेड नेशन में चले गए फॉर देयर इंडिपेंडेंट स्टेटस. कहां चले गए? यूनाइटेड नेशन में, कि हम, मैं इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहता हूं. तो इसलिए अब उनका जो स्टांस था वो बदल गया. समझे कि नहीं? तो समझे हो कि नहीं? तो अल्टीमेट उनका फाइनल स्टांस क्या रहा? द इंडिपेंडेंट स्टेटस. अब दूसरी तरफ आ जाए, जो जूनागढ़ है उसने भी डिसाइड किया था कि वो पाकिस्तान का पार्ट बनेगा और अनाउंस किया था. एंड दे रिमेन कमिटेड, स्टैटिक ऑन देयर स्टैंड्स. तो आज भी जूनागढ़ के नवाब ऑफ जूनागढ़ सिटिंग इन योर पाकिस्तान and you are claiming that territory as a legitimate territory of Pakistan according to boundary commissions, according to a Devian formula. उसके मुताबिक पाकिस्तान का ही हिस्सा है जूनागढ़. And Junagadh is in the south of Karachi, that is sharing water border with you. So it is about 300 miles down, I think 300 kilometers down in water territory. तो इन कराची से नीचे अगर आप, मतलब अब कराची से अगर आप बम्बई जाना चाहें, सहल का रास्ता इख्तियार करें, सहली रास्ता, तो पहले जूनागढ़ आएगा फिर बम्बई आएगा. तो आपको याद है ना, ये वो एरिया है जिसमें कौन इलेक्शन लड़ते थे, बताया मुझे. ये कॉन्स्टिट्यूंसी है फ्रॉम कराची टू बम्बई. ये किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी इलेक्शन लड़ने की? सिंध और बम्बई एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में था. वो कौन इलेक्शन लड़ता था यहाँ बिफोर 1947? नहीं पता. मुझे लगता है इस सवाल का जवाब नहीं आता आपको, है? ये तुम्हारा क्या होगा यार, है? मोहम्मद अली जनाह, कायदे आजम, ये कायदे आजम की एक एमएनए की कॉन्स्टिट्यूंसी थी.
ठीक है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछा है आपने? बेटा समझ आया है? तो ये वो रीजंस, आगे मिनॉरिटी राइट भी आ गया जी जी बिल्कुल। अब मिनॉरिटी राइट्स में क्या है? एंड रेफ्यूजीज, about 5 million people crossed the border after creation of Pakistan. 5 million people did migration across the border. That is called one of the biggest migration. And migration faced observed bloody violence. Hindu majority started violence against Hindu minority in India, and they plundered the resources of the Muslims and killed many families of the Muslims. As Hindus started this criminality, cruelty, and violence at large scale, and Muslim of Pakistan heard the stories. As a reaction, Baloch tribes started attack on Hindu minorities in Pakistan. तो मैसेकर था, आप मैसेकर कहेंगे ना, उनका जो क्रिमिनलिटी एंड क्रुएलिटी थी और जो इतना ब्लडी वायलेंस किया उन्होंने, मुस्लिम मैसेकर। सो हुआ क्या था कि जब ये स्टोरी हमने सुनी तो एज रिएक्शन के तौर पर बलोच ट्राइब ने अटैक करना शुरू किया ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान, हिंदू मिनॉरिटीज। So violence broke from both sides. And a lot of precious lives spoiled in this violence. In 1950, Nehru and Liaquat Ali Khan signed Minority Pact. To protect the minorities in both countries. तो समझ आया बेटा? तो अगला लिखे, how did we become Aryan brother of China? How did we become Aryan brother with China? We are looking at reasons of unprecedented relation with China. Unprecedented. Unprecedented. Precedent. प्रेसिडेंट्स होते हैं ना जो वकील देते हैं, प्रेसिडेंट दिखाते हैं, शो करते हैं जजेस को। रीजंस ऑफ अनप्रेसिडेंटेड रिलेशंस विद चाइना। नंबर 1,
Northern War Theatre. Number 2, Nuclear Cooperation. Number 3, Economic Cooperation. ब्रैकेट में लिखें CPEC. Number 4, Defense Cooperation. ब्रैकेट में लिखें Defense Angle and Strategic Partnership. क्लियर? इसको आप नई हेडिंग में बुला दें, डिफेंस एंगल स्ट्रेटेजिक पार्टी, नई हेडिंग लिख लें, इसको 5 कर दें इसको. डिफेंस की जगह आप यहाँ लिखें सिक्योरिटी एंगल. और आगे लिखें जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. स्ट्रेटेजिक ना लिखें, जियो स्ट्रेटेजिक करते हैं, ताकि ये मैं आपको फिर समझा. आगे लिखें ग्रेट पावर कंपटीशन. नंबर 6. अब एनालिसिस लिखेंगे, नहीं इस लिखेंगे एनालिसिस. हाँ एनालिसिस. अब इसमें हम क्या करेंगे, ग्रेट पावर कंपटीशन इन अरेबियन सी. एनालिसिस के नीचे हेडिंग में डालेंगे बेटा. एनालिसिस में ग्रेट पावर कंपटीशन पढ़ेंगे, नीचे आ जाना, इसको नीचे कर दें. हाँ जी, ग्रेट पावर कंपटीशन इन अरेबियन सी. ठीक हो? और इसके बाद एक और ये कंपटीशन के ही ये एलिमेंट वन हो जाएगा. इसके एलिमेंट हैं. नोट्स बनाना छोड़े बेटा. देख लें, मैं आपकी वजह, आप तेजी से लिखें और बाद में आप ये कर लेना, आपने ये जो इसको मोटा करना है छोटा करना है, ये बाद में कर लें. ठीक है? सो इंडो पैसिफिक 0.1 एंड 0.2 करेंगे. उसके बाद हम करने जा रहे हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. और इसके बाद हम करने जा रहे हैं गल्फ कॉरिडोर. गल्फ कॉरिडोर. और इसके साथ साथ हम करने जा रहे हैं साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है?
इसके साथ हम करना चाह रहे हैं regime change in region and international politics. इसके साथ हम करना चाह रहे हैं rise of China and containment of China. ठीक है। अच्छा, जो आपने गल्फ कॉरिडोर लिखा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ, अब इंडो पैसिफिक 0.1 एंड 0.2 के बाद एक और चीज लिख लें, IMEC वर्सेस BRI। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब जब एनालिसिस की हेडिंग पे आ जाए, एनालिसिस, इस पे लिखे ब्रैकेट डालें और यहाँ लिखे इंटीग्रेटेड डिस्कोर्स, इंटीग्रेटेड डिस्कोर्स of current affair on USA, China, India, on USA, China, India, and role of Pakistan. Bracket close. इसके बाद हम इंडिया को भी टच करेंगे बाद में, थोड़ा सा अगर टाइम मिला तो। हिंदुत्व की है, हिंदुत्व एंड मोदित्व। इंडिया नहीं, वो बाद में, वो बाद में, अभी नहीं लिखना है, आपने लिखना नहीं है वो। मैं जब इंडिया को पढ़ाऊंगा ना, इंडिया को आगे जाके थोड़ा सा सेपरेटली, उसमें हम एक हिंदुत्व एंड मोदित्व एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, सो राइजिंग ऑफ इंडिया विद हिंदुत्व एंड मोदित्व, वो मैं बाद में कराऊंगा। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, लिखे ना अभी आप। तो इसके बाद फिर ये क्लोज होंगे कंट्रीज। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। साबल उजैर, समझ आ रही है? डॉक्टर उजैर कुराई जी, नैयर नैयर, समझ आई है? अभी तो पार्टी शुरू होने जा रही है करंट अफेयर की। हाँ, अभी बस कर रहा हूँ भाई।